Welcome back. In this chapter on minor losses, chapter 10, we were discussing about the resistance coefficient. यानी हम आपको बता रहे थे resistance coefficient calculate करने के लिए और calculate करने के लिए I told you that the minor loss calculation is simply given by energy loss HL is equal to K U square upon 2G. Now this K is the resistive coefficient. It depends upon the substance of which resistance you are calculating. For example, if I am calculating the resistance of fluid, friction of a fluid, then this K is nothing but the Darcy's law, where K is replaced by F multiplied by L upon D, where F is the friction factor, depending upon Reynolds number being for laminar flow or the flow being turbulent, where Reynolds number is greater than 4000. The second thing I told you, in the case of losses, in certain cases like enlargement, contraction, gradual enlargement, gradual contraction, exit losses and entrance losses, how is K calculated? Through the ratio of diameters, through the velocities, through the angles. The last part of this minor loss chapter, which I had told you at the end of the last lecture, would be calculating the resistance coefficient for valves and fitting. यानी हमें जो हमारी K वैल्यू थी ना, उसका जो resistance coefficient calculate करना है, वो valves and fitting के लिए calculate करना है. In other words, I am calculating but nothing but HL is equal to K U square upon 2G. यही चीज मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मगर वाल्व्स और फिटिंग के लिए ये डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट होती है और किस तरह से कैलकुलेट होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. चलें, पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट फॉर वाल्व्स एंड फिटिंग्स या व्हाट इज अ वाल्व. Many types of valves and fittings are installed in fluid flow system. जब आप fluid flow system खोल देखते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं, there are different types of valve. The main function of any valve is to control the amount of flow types. यानी control the amount of flow. इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन फंक्शन आपका वाल्व का होता है ना, वो होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लो. कितना फ्लो आपने देना है, ज़्यादा फ्लो है, कम फ्लो है, फ्लो को रेगुलेट करना. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ वाल्व. There are different types of valve which you can encounter in an industry, which include globe valves, angle valves, butterfly valves, gate valves, and other type of check valves, and several more. But these are the basic valves that we will cover. Now, before I go on, I would like to talk to you about the most basic type of valve. यानी सबसे जो basic valve है, that is the globe valve. Globe valve is one of the most commonest valves and is relatively expensive. The most commonest valve that you're going to find in the industry or anywhere in the market is the globe valve, due to the fact that it is relatively inexpensive. It's a cheap valve. It is the most available valve. It is the most ready, always present valve. तो ये समझ लें कि इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना ग्लोब वाल्व का, ये होता है ये रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है. However, कुछ पाने के साथ कुछ खोना भी पड़ता है. So at the same time as being the least expensive valve, it is also the poorest performing valve in terms of energy loss. हम इस पूरे चैप्टर में एनर्जी का लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, where HL is equal to K U square upon 2G. अब ये देखें कि हर वाल्व के साथ एक रेजिस्टेंस फैक्टर होता है. आप ये अज्यूम कर लें, जो थर्ड लाइन के अंदर मैंने K लिखा है, दिस इज जस्ट द K वैल्यू फॉर अ वाल्व which is given by Ft Le upon D, and it has a certain value 340 Ft. यानी Le upon D is 340 and Ft it is written as it is. What these terms are we will discuss in a bit, but just
In general, I am telling you, K is your resistance coefficient that you are calculating. Ft is the friction factor in the turbulent region. And what is the turbulent region or the exact turbulent region? It is the region where the friction factor is independent of the Reynolds number. I would like to show you this. It is the complete turbulent region, which means it can be here. It can be this line. It can be here. All these lines are straight line till they form a curve. This means whether I take this Reynolds number on this line, whether I take this Reynolds number on this line, or if I take 20, if I am on this Reynolds number, if I am on this Reynolds number, if I am on this Reynolds number, the friction factor is the same. So this is Ft. It is the friction factor in the zone of complete turbulence, which means that Reynolds number will have no impact on the friction factor. That is the meaning of Ft. Le क्या होता है? Le is known as the equivalent length. We will talk about what equivalent length is. And D is the diameter. For now, you should know that ratio of equivalent length to the diameter, Le upon D, is dimensionless. But if I only ask about equivalent length, Le, it will have some unit in meter or foot, SI or American unit. So that is the meaning of these terms. K is equal to Ft Le upon D. अब इसके साथ ये एक वैल्यू है 340 Ft. You do not need to learn any of these values, but you should be able to understand them. The higher the value, the more energy is being lost. कैसे? Original equation आपका क्या होता है? HL is equal to K U square upon 2G. फर्ज करें अगर एक वाल्व की K 340 Ft है और दूसरे वाल्व की K 100 Ft है, provided that Ft is same, U is same. So the larger the constant value, the larger is the energy loss, HL. It's a direct relation. Based on this, जितनी आपकी वैल्यू ज्यादा होगी उतने आपका एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, एंड दिस इज अनडिजायरेबल. तो ये जो पूरी वैल्यू है 340 Ft, ये सिर्फ ग्लोब वाल्व के लिए है, एंड दिस इज अ reasonably high value. Because it is a high value, the globe valve is one of the poorest performing valves in terms of energy loss. ये बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस करता है 340 Ft. एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले सबसे पहले मुझे ये K वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जो 340 से मिली, उसके बाद ये अपने एनर्जी इक्वेशन में डालनी पड़ जाएगी. HL is equal to K U square upon 2G. Like I mentioned, this is amongst the highest of all the valves that we are discussing. Hence, it is a poor valve. It is used in places where there is no problem created by the energy loss. आम तौर पे we use globe valve in places where we are not concerned with the energy loss. अगर हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारी एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है तो हम ग्लोब वाल्व यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी कॉस्ट बचती है और ग्लोब वाल्व बहुत लेस एक्सपेंसिव होते हैं. दे आर इनएक्सपेंसिव वाल्व्स. सो टू in places where we do not care for our energy, use globe valves. Be my guest. Energy loss occurs when fluid travels from input to output as turbulence is created. अब ये valve के अंदर energy loss create क्यों होता है? आपका जो globe valve होता है ना, उसके अंदर the fluid will travel from your input, it will circle around the valve. Obviously, when it circles around the valve, there is a restriction, there is a constriction. Both this restriction and constriction, they will result in turbulence being created. Turbulence, as I mentioned before, is chaotic nature of flow. Due to this turbulence, there would be energy losses created in your valve. Another advantage of the valve globe valve is it is used to throttle the flow in a system.
यानी आपके सिस्टम के अंदर वो आपका जो फ्लो है ना फ्लूइड का, उसको आपका ग्लोब वाल्व थ्रॉटल करता है. What do I understand by throttling? What do we understand by throttling? Throttling means we add resistance to the flow. हम उस फ्लो के अंदर कोई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिलीवर्ड. We need to control the amount of fluid that is being delivered. We need to add some resistance to it. This is known as a throttling. The simplest example is a garden hose. Often you have seen that hoses, they have valves connected to them. When you open the valve fully, the pressure comes full and water sprinkles out from the holes in the hose. But if you partially close the valve, the same hose, the pressure is less and the water does not come out with that much force. That is what throttling is. In commercial pipes में where throttling is not needed, where we do not need throttling, it is not suitable to use a globe valve. हम globe valve commercial pipes में इसलिए यूज नहीं करते जहां पर throttling needed नहीं होती, क्योंकि उनका energy loss बहुत ज्यादा है. अगर energy loss इतना ज्यादा नहीं होता तो globe valve would have been a good option, but commercially used pipes, if they have a lot of energy loss, it is not good for us. So unless commercial pipes need the applications of throttling, we do not use globe valve. हाँ, अगर हमें अपने commercial pipe के अंदर throttling चाहिए, बिस्मिल्लाह, use a globe valve. There are more efficient valves present with a lower LE upon D and are considered. मैंने आपको ये बताया था कि the resistance factor depends upon LE upon D. इस वैल्यू के ऊपर LE अपॉन D डिपेंड करता है, क्योंकि जो FT है दैट डिपेंड्स अपॉन द पाइप नहीं चेंज होगा. स्केड्यूल 40 है, स्केड्यूल 80 है, मगर ये LE अपॉन D जो रेशियो है, इसके ऊपर एफिशिएंसी ऑफ द वाल्व्स इज मेजर्ड. द हायर दिस नंबर LE अपॉन D, द लेस एफिशिएंट इज द वाल्व. क्यों? मोर एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट. So let us take an example. This is an example of a globe valve. Let us take a second case, the angle valve. The construction of an angle valve is similar to that of a globe valve. The path is somewhat simpler. By path, I mean the path of fluid flow. The fluid will come from the lower port, just will move around the valve and exit to the right. Globe valve में क्या होता है? Fluid नीचे से आता है, it comes from down, it moves around the valve. Because it is moving around the valve, there is more restriction. It has to circle around the valve, and hence the LE upon D value due to this construction is really high, 340. In an angle valve, it just comes up towards the valve, moves to the right. There is less constriction. As a result, there is less resistance to flow. Because of this, the LE upon D value is much less. तो अगर and because if LE upon D value is much less energy is lost compared to the globe valve. This can be seen. The resistance factor for an angle valve is given by K is equal to FT upon LE upon D. That is the main formula for any valve. Look at this value, 150 FT. Globe valve, 340 FT. Angle valve, 150 FT. That is nearly half the value of a globe valve, the energy loss. Hence, it is also 50% more efficient than a globe valve. So angle valve is a better valve or a better bet in comparison to a globe valve if you want to reduce the energy losses. However, if you need a throttling, there is no other option. Globe valves are used for throttling purposes. And if inexpensive valves are needed, again you use globe valve, because more the energy loss, the less expensive your valve is going to be. If a valve is designed that it is a very good valve with least amount of energy losses, obviously it is going to be very expensive and not ideal to use in everyday application. हाँ, जो आपके छोटे मोटे काम है, प्लम्बिंग के काम है, वहां पर आप ज्यादातर ग्लोब वाल्व के यूज करते हो, मगर कमर्शियली जब आप इंडस्ट्री में यूज करोगे
तो आप ग्लोब वाल्व को अवॉइड करोगे, जहां पर आपके एनर्जी लॉसेस कम से कम आपको चाहिए और ग्लोब वाल्व आपको बहुत ज्यादा देते हैं। ये एक पिक्चर है आपकी एंगल वाल्व की। देखें यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन कम हो रही है। योर फ्लूइड फ्लोज टुवर्ड्स द वाल्व, मूव्स टू द राइट। इन ग्लोब वाल्व इट विल सर्कल अराउंड, hence the globe valve has a value 340 ft. This one has a value 150 ft. Let us then talk about the gate valve. When fully open, there is very little obstruction in the flow path to cause turbulence in the flow stream. Gate valve is supposed to be one of the best valves used. Why? It is one of the best type of valves for limiting the energy loss, because look at its value, the resistive coefficient. Ft is equal to Le upon D, 8 Ft, which means that Le upon D is only 8. That is a very good valve because the energy loss is being minimal. At the same time, because it is being minimal, it is the most expensive valve. So it can be used also for throttling by partially closing the valve. So it is one of the better valves and used in the industry. However, it is way more expensive than the globe valve, but it is a worthwhile investment, because once you put this in the industry, then you don't have, it's a one time cost. You don't have to continuously lose your energy due to its low K value. That's an example of a gate valve. K is equal to 8 Ft. अब हम बात करते हैं check valve की. Check valve allows flow in one direction while stopping the flow in the opposite direction. An example is a sump section. अब sump क्या होता है? A sump is a reservoir of a fluid. It can be oil, it can be liquid, where water is extracted. A pump is used in the sump and a suction by a suction and discharge pipe. आपके पास दो पाइप होते हैं. पंप आपका एक सक्शन पाइप सक करता है रिजर्वायर से, वो जाकर आपके डिस्चार्ज पाइप में जाकर देगा. अब इन पाइप्स के बीच में वाल्व लगे हुए होते हैं. These are the check valves. When water is being sucked in the suction pipe, it cannot go in the discharge pipe. The check valve is there, which will not prevent the water to go there. However, after the suction pipe, when it is going in the discharge pipe, the valve is present. It will close to prevent the backflow of the fluid to come back in the suction pipe and go towards the sump. So that is the purpose of a check valve. At the suitable water level, the pump will shut off and the valve prevents the water to go back in towards the sump. It will move forward into the pipeline. There are two types of check valve, which are the ball valve and the swing valve. अब swing valve को आप देखें, it checks a modest restriction to flow and K is equal to Ft Le upon D 100 Ft. The ball check causes more restriction. Why is there more restriction? Because in a ball valve, the fluid flows around the ball. Obviously, if the restriction is more, the Le upon D value is more. It is about 150 Ft. Hence, there are more losses in the ball valve compared to the swing valve because of the restriction. However, the ball check valve is smaller and simpler than the swing check. It is a simpler valve compared to the swing valve, but the basic criteria is same, that higher you have the Le upon D value, the more energy is being lost. That's an example of a check valve which is present in your discharge pipe, which goes to the suction pipe. This valve will close and prevent the backflow when the pump closes back into the sump. And here's an example of a ball valve. It's a smaller than the check valve, swing valve, but sorry, this is a swing valve. The ball valve is smaller than your swing valve, but it has a greater K value due to the fluid flowing around the ball, increasing the restriction in flow. Butterfly valve. This is a type of valve in which a smooth disc pivots around a vertical shaft. इसके अंदर एक डिस्क होती है जो पिवट करती है वर्टिकल शाफ्ट के. When a butterfly valve is fully open,
only a thin dimension of the disc faces the flow, providing a small obstruction. Fully open butterfly valve has a resistance of K is equal to Ft Le upon D, which is just 45 Ft. Hence, it is a good valve. The energy loss is less. But as the size of the butterfly valve increases, the K value decreases, which means that suppose you have a 12-inch butterfly valve and a 14-inch butterfly valve. The 14-inch butterfly valve would have a lower K value. Hence, it would have less energy losses compared to a butterfly valve which has a smaller size. Foot valves and strainers. They perform a similar function to the check valves. That means the foot valves also prevent backflow. By word strainers means strainers are attachments which prevent foreign bodies. आपने अपने घरों में देखा होगा, अपने बेसिनों में स्ट्रेनर्स लगाए होते हैं ताकि ड्रेन पाइप के अंदर कुछ कचरा नहीं जाए, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं जाए, पार्टिकुलेट मैटर नहीं पहुंचे, इसीलिए ये स्ट्रेनर्स का काम होता है. बट इंडस्ट्रियल लेवल के अंदर स्ट्रेनर्स ह्यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, when these valves are equipped with strainers to prevent foreign object out of the piping system, आप कोई लेक से पानी को निकाल रहे हैं, उधर तो ह्यूज स्ट्रेनर्स होंगे क्योंकि आपकी जो फॉरेन बॉडी होगी नेचुरल लेक में फिश होगी. योर स्ट्रेनर्स शुड बी बिग इनफ टू प्रिवेंट द फिश फ्रॉम गोइंग इनटू योर पाइपिंग सिस्टम. The resistance of two kinds of foot valves are present: 420 Ft, which is a poppet disc type, and hinge disc type 75 Ft. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि poppet disc type 420 Ft का है, तो it is even more poorer than a globe valve. Globe valve 340 का था. तो बिकॉज इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, कंस्ट्रिक्शन, तो बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रिक्शन देयर इज मोर एनर्जी लॉस. दीज आर सम पिक्चर्स. अब जिस तरह वैल्व्स होते हैं ना, उस तरह आपके पास एल्बो जॉइंट्स भी होते हैं या टी शेप्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं. दीज आर एल्बो. पाइप फिटिंग्स के अंदर ये एल्बोज होती हैं. इनके भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. कोई 90 डिग्री पे होती है, कोई 45 पे होती है, मतलब सब में कोई ना कोई के वैल्यू है. एक 20 FT की है, 16 FT की है, 26 FT की है. FT चेंज नहीं होगा. ये जो वैल्यू है ना LE अपॉन D, ये इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली देयर आर टी शेप्स विच फ्लो थ्रू अ रन और फ्लो थ्रू अ ब्रांच. अब इंपॉर्टेंट बात आती है. अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ वाल्व के बारे में दिखाया था और उसके बारे में बताया था कि LE अपॉन D क्या चीज होती है. अब प्लीज पे अटेंशन नाउ. It is important to determine the resistance data for any particular type and size of valve. आपने resistance data निकालना है कोई भी particular type या size of valve के लिए, because the resistance is dependent upon the geometry of the valve and the fitting. It depends कि वो valve किस shape का है, फिटिंग किस शेप की है, उसकी क्या ज्योमेट्री है, वो 45 डिग्रीज के ऊपर है, 90 के ऊपर है, एल्बो जॉइंट है, ब्रांच फ्लो है, टी शेप्ड है, थ्री वे है. ये सब इस पे डिपेंड करता है कितना लॉस हो रहा होता है. Energy losses occurring as fluid flow through a valve or fittings have been discussed. A method to determine the K value is different and the value of the resistance coefficient given is K is equal to LE upon D FT. ये मैंने आपको समझा दिया कि K जो होती है वो LE upon D multiply by FT होती है. The value of LE upon D is called the equivalent ratio और ये वैल्यूज आपको लिटरेचर में मिलती हैं. आपको सिर्फ आना चाहिए कि मैं इस वैल्यू को यूज किस तरह करूं, और इस वैल्यू के कोई यूनिट नहीं होंगे कंबाइंड LE अपॉन D के, क्योंकि ये रेशियो है. LE के यूनिट लेंथ के यूनिट होंगे, D के यूनिट लेंथ के यूनिट होंगे, और ये कंसिडर होती है फॉर एनी गिवन टाइप ऑफ वाल्व ऑफ फिटिंग. यानी कोई भी अगर ग्लोब वाल्व हो उसके लिए कांस्टेंट होगी. अब LE होता क्या है? LE is basically the equivalent length and is the length of a straight pipe of the same nominal diameter as the valve. आपका जो पाइप होता है ना, उसकी जो लेंथ है उसी नॉमिनल डायमीटर की वाल्व की, which would have the same resistance as the valve.
यानी आपने उस पाइप को इस तरह डिजाइन किया है, एलई एक उसको वाल्व को स्टैंडर्ड बनाकर कि इसका जो डायमीटर होगा वो सेम रेजिस्टेंस होगा वाल्व के लिए फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। D is the actual inside diameter of the pipe. I repeat, जब आप D यहाँ पर भी लेते हैं तो आप पाइप का actual inside diameter लेते हैं। I would like to take a pause here. मैंने आपको जहाँ जहाँ fluid mechanics का lecture दिया है, everywhere I have talked about fluid mechanics, I have always told you take the internal diameter of the pipe for your calculations, for your area, for your flow rate, unless and until it is non-circular flow. Even in non-circular flow, the only point where you take the outer diameter is the point where your tube is inside another shape, which means a tube inside a tube inside the duct. If a tube is inside the tube, the bigger tube or the outer tube would you would take the internal diameter for area. The inner tube you would take the outer diameter. Please do not forget this. Apart from this point, everywhere you always take the internal diameter. Ft is the actual friction factor in the pipe. ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि Ft क्या है. Actual friction factor in the pipe है in which the valve or the fitting is connected and is taken in the zone of turbulence. The zone of turbulence is Reynolds number is independent upon the friction factor. It has no impact. So values for Ft vary with pipe. ये जो आपकी Ft values है ना, कुछ तो calculated है, कुछ पाइप से वैरी करती हैं और ये ऑब्टेन हो सकती हैं टेबल से, स्टैंडर्ड साइजेस से. इफ अ पाइप इज डिफरेंट फ्रॉम अ न्यू क्लीन स्केड्यूल 40 पाइप, और हमारे कोर्स में कुछ वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं स्केड्यूल 40 पाइप के लिए, मगर अगर मैं कोई और पाइप की बात करूं या कोई और ट्यूब की बात करूं, कोई स्केड्यूल 80 हो गया, स्केड्यूल 100 हो गया, स्केड्यूल समथिंग हो गया, 160 हो गया, आपको FT वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको जो टेबल प्रोवाइड की है वो सिर्फ स्केड्यूल 40 के लिए है. So you should know how to calculate your values if you do not get a schedule 40 pipe. अब ये टेबल देखें. This is what I was talking about literature. In literature you have been given value resistance in valves and fittings expressed as equivalent length in pipe diameter L upon D. Globe valve देखें, fully open 340 LE upon D. Unit इसलिए नहीं है, रेशियो है. Angle valve 150. गेट वाल्व अगर फुली ओपन है तो 8 है, 3/4 ओपन है, सॉरी हाँ 3/4 ओपन है तो ये 35 है, हाफ ओपन है तो 160 है. चेक वाल्व स्विंग टाइप 100 है, चेक वाल्व बॉल टाइप 150 है. तो हर वाल्व के साथ उसकी कोई ना कोई LE अपॉन D वैल्यू होगी. सिमिलरली हर एल्बो के साथ उसकी कोई ना कोई LE अपॉन D वैल्यू होगी. ये वैल्यूज आपको लिटरेचर से मिल जाती हैं. आपको सिर्फ और आपका क्वेश्चन बताएगा कि आपका वाल्व कौन सा है, आपकी फिटिंग कौन सी है. दिस इज ऑल मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन. So you can easily extract this information from this data present in literature. इसी तरह जो मैं बात कर रहा था कि आपका पास एक स्केड्यूल 40 की टेबल होती है. अगर मैं बोलूं कि आपका पाइप स्केड्यूल 40 है, 4 इंच पाइप है, तो आपको मालूम है फ्रिक्शन फैक्टर 0.016 है, टेबल में गिवन है. अगर मैं बोलूं आपका पाइप DN 400 है, तो आपको मालूम है कि वो होगा ये 0.012 फ्रिक्शन फैक्टर. मगर ये टेबल जो है वो सिर्फ स्केड्यूल 40 के लिए है. मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ यू गेट अ स्केड्यूल 40 पाइप you can easily calculate the friction factor from this table in the turbulent zone. But if it is any other schedule pipe, be it schedule 50, 60, 70, 80, 100, 160, blah blah blah, it does not matter. You cannot use this table. You have to calculate it from the Moody's diagram. So please look at your question, that what does your question suggest.
what type of pipe I am using. And then if it is not from your schedule 40, the procedure is, first you need to calculate LE upon D for your pipe or fitting. If the pipe is your schedule 40, you can read it from the table. If it is not a schedule 40, you determine the pipe wall roughness. You determine the Reynolds, you don't need the Reynolds number, you have the roughness, you don't need the Reynolds number because it is in the turbulent zone. In the turbulent zone, Reynolds number does not matter. You can simply use the Moody diagram to calculate your friction factor. Compute K by FTLE upon D, and then HL is K U square upon 2G. Let us look at some examples. First example. Determine the resistance coefficient K for a fully open globe valve placed in a 6-inch schedule 40 steel pipe. Let me add something to this. Determine the resistance coefficient K and the equivalent length for a fully open globe valve. तो आपका क्वेश्चन आपको यह बता रहा है कि सबसे पहले तो मुझे के ढूंढना है। मुझे मालूम है कि के ढूंढने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं। अगर मैं वाल्व और फिटिंग की बात करता हूं, सबसे पहले तो मुझे चाहिए होता है मेरा इक्विवेलेंट रेशियो एल ई अपॉन डी। दूसरी चीज मुझे चाहिए होती है एफ टी। एल ई अपॉन डी की बात करते हैं। क्या मुझे बताया है कि मेरा कौन सा वाल्व है या क्या? यस, बताया है। ये लिखा हुआ है फुली ओपन ग्लोब वाल्व। तो मैं जाऊंगा अपनी टेबल के अंदर जो मुझे प्रोवाइडेड है, ग्लोब वाल्व में देखूंगा फुली ओपन 340। सही है, ये मुझे मिल गया 340। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? प्लेस्ड इन अ 6-inch schedule 40 स्टील पाइप। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि स्केड्यूल 40 का डेटा आपके पास है। स्केड्यूल 40 के अलावा कोई भी पाइप हो तो इट डज यू हैव टू कैलकुलेट, because schedule 40 is in my data and it is even told me that it is a 6-inch schedule 40 steel pipe. I go on my schedule 40 pipe, it says 6-inch, 5 and 6-inch are 0.015 ft. So I have this value. All I do is 340 multiply by 0.015, I get 5.10. My second part of the question was equivalent length. Now remember, equivalent length क्या होती है? LE. एल ई अपॉन डी तो एक रेशियो है। मैंने आपसे पूछा मुझे एल ई ढूंढना है। एल ई ढूंढने के लिए मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जिसमें मैं एल ई को सब्जेक्ट बनाऊंगा एंड आई वुड सिंपली डू के मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय एफ टी। उसके लिए मुझे लाजमी बात है कि पहले के ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से ढूंढ चुका हूँ। के मैंने ढूंढ लिया है और इसीलिए ढूंढा था ताकि वो के की वैल्यू में यहाँ पुट कर सकूं। मुझे सिर्फ अपने यूनिट्स के ऊपर केयरफुल रखना है कि यहाँ पर अमेरिकन यूनिट्स हैं तो अमेरिकन यूनिट्स में मेरा आंसर आएगा। तो अज्यूमिंग अगर मुझे एल ई ढूंढना है, के की वैल्यू मैंने ढूंढ ली है 5.10। ये जो डी है ये डायमीटर है। अब इसके लिए मेरे पास स्केड्यूल 40 पाइप होता है अपेंडिक्स के अंदर। मैं अपेंडिक्स में जाकर जिस तरह मैं चैप्टर 6 ऑनवर्ड्स डायमीटर चेक कर रहा था पाइप का, मैं जाऊंगा अपने पाइप का इंटरनल डायमीटर लूंगा, कीपिंग इन माइंड कि उसको फुट में लूंगा। अगर इंचेस में गिवन है, फुट में कन्वर्ट कर लूं। सो आई राइट डाउन द वैल्यू इन फुट एंड एफ टी इज फ्रॉम द स्केड्यूल 40 टेबल। So that is all I've done. LE is equal to KDFT, where D can be taken from the appendix 0.5054 foot. LE is equal to 5.10, जो K की value है, I just calculated, into 0.504 the D value taken from the appendix, divided by 0.015, that is the FT value for a 6-inch pipe. 5 or 6-inch pipe, both have this value. So I get my LE value, and look, the LE value has some units because it is not a ratio.
It has units foot in this case. In the case of SI, it will have meter. Next example. Calculate the pressure drop across a fully open globe valve placed in a 4-inch Schedule 40 steel pipe carrying 400 gallon per minute of oil, leaving a specific gravity of 0.870. Okay, no problem. It's a pressure drop equation. You know the pressure drop equation. We have constantly been doing the energy equation from lecture 7 till now. If you are unfamiliar with this equation, please watch the previous videos. मगर energy equation क्या था? एक दफा मैं repeat कर लेता हूँ. P1 upon gamma plus Z1 plus U1 square upon 2G plus HA minus HR minus HL is equal to P2 upon gamma plus Z2 plus U square upon 2G. ये आपका टोटल एनर्जी इक्वेशन था. अब आप वो डेटा लिख लें जो आपके पास है. डेल्टा पी मुझे ढूंढना है. स्केड्यूल 40 स्टील पाइप है और इसने बताया हुआ है 4 इंच है और मुझे ये भी दिख रहा है कि तमाम यूनिट्स एसआई यूनिट्स के अंदर हैं, सॉरी अमेरिकन यूनिट्स के अंदर हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं उसकी एफटी निकाल सकता हूं क्योंकि ये स्केड्यूल 40 का पाइप है. FT निकाल लिया. 4 inch is over here, 0.016. No problem. Similarly, I can also take out the diameter because I will need this diameter later. 0.3355 foot. Okay. LE upon D, it's a fully open globe valve. I go in this table. Fully open globe valve, 340. No problem. SG 0.87 दिया है and we also know that SG is the specific gravity multiplied by the density of water or specific weight of water, whatever purpose you're using. And because these are American units, the density of water is 62.2. Q is 400 gallon per minute. Because I'm going in American units, please convert it into the correct American units, which are 400 foot cube per minute per second. This is the pressure difference equation which I wrote before. Why I can calculate Z1 and Z2? It is in straight line. Why I can remove HAHR? There is no pump, there is no motor. Why I remove U1 and U2? This is just one pipe. One pipe would have the same velocity because the diameter of the pipe is not being changed. दो pipes नहीं हैं. अगर ये for example अंदर जा रहा होता schedule 40 pipe, बाहर आ रहा होता यहाँ पर schedule 80 pipe, तो ये दो different pipes थे. तो यहाँ पर आप बेटा U1 और U2 को remove नहीं कर सकते थे. There was no possible way to cancel out U1 and U2 because of two different pipes. So they would have two different areas. According to the continuity equation, you would have two different velocities. So in your questions, please notice whether it is one pipe or whether it is two pipe. That's why I've cancelled that out. I make minus HL the subject. I make the pressure equation. Yes, gamma HL is equal to P1 minus P2. This is the pressure difference. Now the first thing is I need to find HL, I need to find gamma. Gamma can easily be found out by the specific weight. 0.87 into 62.2, 54.14 pound force per foot cube. Keep on writing the units because it will be easier for you. In American system, it is very common to make mistakes. So I wrote the units pound force per foot cube. Then I write the HL formula, which is nothing but KU square upon 2G. Now the thing is, I need to find two parameters over here. Actually, three parameters. I need to find HL, which is my actual answer. I need to find K, and I need to find my velocity. Now, velocity can easily be found out because the flow rate is given, and I can calculate the area of this pipe either from the appendix
or from this diameter that I already wrote through the appendix. So if I do pi d square upon 4, I get this value. That is the area of my pipe. I change my Q in the correct units. I calculate my flow rate, which is 0.889246 foot cube per second. Then from this equation, I calculate U, 10.0593 foot per second. That is my U. The second thing was K is equal to LE upon D FT. LE upon D, fully open globe valve, go in the table, write down the value 340. FT is 0.016. How do I know? The second table or a table was for schedule 40. I copy this value. So K is 5.44. अब बचा ही क्या मेरे पास? HL is equal to K U square upon 2G. यही फॉर्मूला था ना HL का. एक चीज मुझे याद रखनी है कि मैं G के अंदर 32.2 लिखूंगा क्योंकि ये SI यूनिट्स में नहीं है, अमेरिकन यूनिट्स में है. अगर ये SI यूनिट में होता तो इट वुड सिंपली बी 2 into 9.81. So HL is 5.44 into 10.059 square upon 2 into 32.2. HL is 8.547 मीटर. मगर इस HL से पहले गैमा भी था जो 54.14 था. When I multiply the two answers, my answer is pound force per foot cube. यहाँ पर जो आ रहा था, यहाँ पर फुट क्यूब आ रहा था और यहाँ पर फुट आ रहा था. इसकी भी लेंथ. जब मैं ये फुट काटूंगा और फुट क्यूब से एक काटूंगा तो पाउंड फोर्स पर फुट स्क्वायर हो जाएगा. अब याद रहे कि प्रेशर अमेरिकन यूनिट्स में पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है. देयर इज नो सच थिंग एज पाउंड पर स्क्वायर फुट commonly. Yes, you can write it in that unit, but it is not measured like that. It is pound per square inch. This is coming pound per square foot because this was foot cube, this was foot. 1 foot got cancelled here with 1 foot over here. So my answer multiplying this and this is 462.768 pound force per foot square. I immediately convert it into inch. 12 inches is 1 foot. Because it is square here, I put a square here, I put a square here. This answer divided by 144 is going to give me 3.21 psi, or in other words, pound force per inch square. That is my answer. So you see, there are a lot of calculations in this and unit conversion, but you should be able to solve these questions by now. Always look at the units, go in the correct units, go step by step, there is no hurry. Last example. Up till now, I gave you examples in the same schedule 40 pipe. Now look at this. Calculate the energy loss for the flow of 500 meter cube per hour of water through a standard P connected to a 6-inch iron uncoated ductile pipe. It is assumed that the flow is through a branch. हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है HL. अब HL का फॉर्मूला क्या होता है? K is equal to U square upon 2G. यानी मुझे K भी ढूंढना पड़ेगा और U भी ढूंढना पड़ेगा. U can easily be found out because this flow rate is given 500 meter cube per hour. I will convert it into the SI unit 500 meter cube per second. That is my flow rate. The area of this iron uncoated ductile pipe can be found from the appendix. I open the appendix for iron uncoated pipe. 6 इंच के ऊपर मैं उसका डायमीटर, इंटरनल डायमीटर रीड कर लूंगा या एरिया कॉपी कर लूंगा और उसको मैं मीटर स्क्वायर में लूंगा क्योंकि ये चीज मेरी मीटर स्क्वायर के अंदर है. सही है, ये भी कैलकुलेट हो गया. तीसरी चीज क्या है? इससे जरिए मुझे मेरा U मिल जाएगा. Q इज इक्वल टू UA. अब मुझे K कैलकुलेट करना है. K के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं. पहली चीज क्या चाहिए होती है? LE अपॉन D. दूसरी चीज क्या होती है? FT. Let us talk about LE upon D first. My question tells me it is a standard T connected to a 6-inch iron uncoated ductile pipe. Standard T, these are two important words.
It is the standard T, number one, and flow is through the branch. What do? I go on my LE upon D table. I see the table, the last column here is standard T. Standard T, there is one flow through the run, which is 20. The other is flow through the branch, 60. I choose this because my question said through the branch. That is just upon my LE upon D. मुझे और क्या चाहिए? मुझे FT चाहिए. Can I use this table for FT? I cannot. This table is just for schedule 40. What do? And because my pipe is iron ductile pipe, मुझे मूडी चार्ट यूज करना पड़ेगा. और मूडी चार्ट में 3 पैरामीटर होते हैं. एक पैरामीटर होता है फ्रिक्शन फैक्टर, दूसरा पैरामीटर होता है रेनॉल्ड नंबर, तीसरा पैरामीटर होता है relative roughness, which is nothing but your diameter upon your roughness. जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो तो मुझे ढूंढना है. मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है या रेनॉल्ड नंबर का इम्पैक्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं FT की बात कर रहा हूँ. FT falls in the zone of turbulence and Reynolds number is independent in the zone of turbulence. So definitely I would need the third factor, which is relative roughness. I have the diameter of my pipe, and from the table, remember the table I taught you in chapter 8.2, all materials have a certain roughness. From that table, you can write down the roughness of an iron pipe. The diameter you already found in the appendix, you divide that by the roughness to find the relative roughness, and then read from the Moody's chart. So for example, Q is 500 meter cube per cube per hour. LE upon D is 60. Roughness of the iron pipe is 2.4 into 10 to the power minus 4. This is from that table 8.2. 6-inch iron coated ductile pipe is 159.3 millimeter diameter. Convert that into the meter and get the area. You get the area, and area can be used with the flow rate. D upon E, relative roughness, is coming 663. You use the Moody chart. आपको मालूम है कि आपकी relative roughness 663 है. आप अपने Moody chart में जाएंगे. Moody chart ये रहा. 500 की वैल्यू यहाँ पर है, 750 की वैल्यू यहाँ पर है, 663 की वैल्यू यहाँ पर कहीं पर बीच पे होगी, and it is in the zone of turbulence. So you take this curve, it's somewhere over here, keep it straight, take it here. It's coming somewhere here, 0.022 या 023 इधर कहीं बीच में आ रही है. You write down that value for FT, 0.022. K is equal to LE upon D FT, 60 into 0.022, you get 1.32. HL is equal to K U square upon 2G, where U can be calculated from the flow rate. Just make sure your flow rate is in your SI units, everything is perfect, and you can calculate your HL. 1.32, that is your K value. 6.968 is your velocity I just calculated, divided by 2 into 9.81. And that is how you calculate your HL. Now this was an example for a pipe which was not your schedule 40. It was not a standard schedule 40 pipe. So you had to calculate the FT from the Moody's chart. So that is how this thing is calculated. Thank you very much for your time.